हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आल्स के टीवी। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। मई टू अगस्त 2023 एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ फिल्म और मूवी दैट यू वॉच्ड एंड डिड नॉट एंजॉय। पहले क्यू कार्ड ये होता था डिस्क्राइब अ मूवी दैट यू थिंक इंटरेस्टिंग और डिस्क्राइब अ मूवी दैट इज़ रियली इंजॉयबल। ओके, तो मोस्टली बच्चे थ्री इडियट के बारे में बताते थे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। डिड नॉट एंजॉय, ठीक है जी। एंड द क्यूज आर व्हाट द मूवी वाज एंड when you watched it and who you watched it with and explain why you did not enjoy it। कहते वो कौन सी मूवी थी, कब की थी वो आपने वॉच, एंड किसके साथ की थी, एंड क्यों आपने सोचा कि ये इंजॉयबल मूवी नहीं है। आइडिया कोई भी ले लो कि आपका कोई पॉपुलर एक्टर हो सकता है, चाहे आमिर खान ले लो, चाहे शाहरुख खान, कोई भी ले सकते हो। कोई भी फिल्म उसकी क्या होती है, फ्लॉप हो सकती है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई मूवी जो आपको ना पसंद आई, कोई पंजाबी मूवी भी हो सकती है, ठीक है। सैडली जैसे कि ऊपर टेस्ट हुआ है, एक जो सीरीज आई है उसके बारे में भी आप बता सकते हो इंडिया में। तो मेरा आइडिया कोई भी मूवी, मैंने ABC एक लिखा है, आप कोई भी मूवी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने जस्ट एक आइडिया लिखा है, ओके। तो कोई भी आप नेम लिख सकते हो वहाँ पे और एक्सप्लेन ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने किया। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट माय क्यू कार्ड। I like watching comedy movie most than any other movie genre and try to watch at least the movie in a day. I watched ABC, मैंने कहा था ना आपको ABC के बारे में बताया, कोई भी आप नेम लिख सकते हो यहाँ पे। A movie, comedy movie of 2014 and I was highly frustrated. The movie plot was not up to the mark. It was about taping an intimate event of a married couple. By them, they lost it. It was hilarious to me. Why should someone film the private moment? In fact, did not I in fact I did not get the answer when I asked myself about the issue. The movie make plan to make a comedy, but I think there are no such comic element which make the audience laugh. Moreover, the movie rating on the IBDB is low, 5.1 only, and the movie shows stories of a married couple and the weird event of recording their private issues. They planned to do so aiming to increase their internal bonding, but everything turned mess. One tape was missing. The entire event appeared foolish. An individual with a sharp sense will not act like this. I believe that watching this movie last week, though the movie was made in 2014, I watched it in 2016. The first thing is that I did not make it the mindset to watch the low rated movies. Before watching my end movie, I usually check the rating from different websites like IMB, Rotters, Tomatoes। यानी कि ये मैंने क्या बताया था कि क्यों नहीं मैंने लाइक की थी, बेसिकली ये बताया यहाँ पे मैंने। When I finding the rating low, I do not watch those movies, but I had to watch it as I had no option left on that night. I turned from my call center job and could not sleep, and it was about to be morning, so I planned to sleep after watching a movie. I picked this one and unfortunately forgot to check the rating. That was the biggest mistake for me in selecting the movie. After completing the movie, my mood was changed and even I not sleep well, and I could not enjoy the movie for some particular reason. The first and the foremost important thing is the movie success is the plot. ओके, ये मैंने सारी की जानी डिटेल में ज़्यादा चलेगा। अगर आप एक्सटेंड करना चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो अगर आपका क्यू कार्ड वहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है। ओके, if the movie plot is not strong, it was expected that the movie will not have a good rating. Besides, the audience are not limited to a certain age group rather than the school going kids, so the movie plot should made be considering the age of audience. Okay, ji. Exploiting materials should be avoided as much possible. You are making a comedy movie, but it doesn't refer the movie should be filled with adult content. Moreover, this movie plot may inspire on performing such foolish acting like recording the intimate events and it is a missing in the real life. I think the life will turn hell and negative consequences will be first than those who screamed on the movie. For all such reason, I did not enjoy the movie at all. तो ये मेरा आइडिया था। इसके अलावा आपको और कोई आइडिया वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर मोर अपडेट टू द आइल्स एंड सेंटली आस्क क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।